नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बार फिर आप लोगों के लिए एआईबी 19 को देखते हुए एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज लेके आया है, जो कि टोटल 4 सब्जेक्ट को कवर करता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ और एनआई एक्ट को। ये टोटल 8 मार्क्स आपका कवर करता है एआईबी के सिलेबस में। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, indications of consideration does not make the contract. Option A void, option B voidable, option C unenforceable, option D neither void or voidable. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेमस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 the honorable court held that the contract was accepted on being option A communicated, option B acted upon, option C refused, option D advertised. इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। Next question. As a general rule, an agreement made without consideration is option A void, option B voidable, option C valid, option D unlawful. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Next question. Which of the following is correct of a standard form contract? Option A, it is a valid contract. Option B, one party has no choice but to accept and sign the contract. Option C, both 1 and 2. ऑप्शन डी, द कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सूट फॉर डैमेजेस फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस। ऑप्शन ए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, ऑप्शन बी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी परफॉर्म्ड और ब्रीच अकर्ड, ऑप्शन सी, एनीवेयर इन इंडिया, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जज इन पर्सोनम means a right against option A specific person, option B the public at large, option A specific thing, option D none of these. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement to remain unmarried is option A valid, option B void, option C voidable, unenforceable. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement enforceable at law is option A enforceable acceptance, option B accepted offer, option C approved promise, option D contract. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, void agreement signifies option A agreement illegal in nature, option B agreement not enforceable by law, option C agreement violating legal procedure, option D agreement against public policy. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। A proposal when accepted becomes option A promise under section 2B, option B agreement under section 2E, option C contract under section 2H, option D none of the above. इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर अंडर सेक्शन 2A is option A communication from one person to another, option B suggestion by one person to another, option C willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of, option D none of the above. इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect? Option A specific relief act 1963 extends to the whole of India except state of Jammu and Kashmir. Option B specific performance is granted where there exists no standard for asserting damages. Option C, where the aggrieved party can be adequately compensated in money, he will get only a decree for damages and not the recourse to, option D none of the above. इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Transfer of Property Act 1882, unborn person occurs vested interest on transfer for his benefit under Transfer of Property Act. Option A upon his birth, option B 7 days after his birth, option C 12 days after his birth, option D none of all. इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Transfer of Property Act deals with onerous gift? Option A section 127, ऑप्शन बी सेक्शन 126, ऑप्शन सी सेक्शन 125, ऑप्शन डी सेक्शन 124। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 came into force on, option A 9 December 1881,
ऑप्शन बी 19th December 1881, ऑप्शन सी 1st March 1882, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। Next question. The term negotiable instrument is defined in the Negotiable Instrument Act 1881 under section option A section 12, option B section 13, option C section 13A, option D section 13B। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। Next question. The existence of statutes of limitation are due to a long dormant claims have more of cruelty than justice in them. Option B, the defendant may have lost the evidence to dispute stale claim. Option C, persons with good causes of action should pursue them with reasonable diligence. ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिटेशन एक्ट इज अप्लीकेबल टू ऑप्शन ए सिविल सूट, ऑप्शन बी क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी सिविल ऑल द अबव। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 enables the correct enables the court to on delay in filing dash on sufficient certification of sufficient cause. Option A appeal or application. Option B appeal suit and application. Option C appeal petition and counter petition. ऑप्शन डी अपील पिटिशन सूट एंड काउंटर पिटिशन। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Next question. Limitation period prescribed in filing a suit by a mortgagor to recover possession of immovable property mortgaged. ऑप्शन ए 20 years, ऑप्शन बी 12 years, ऑप्शन सी 10 years, ऑप्शन डी 30 years। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। Next question. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law, which provisions brings in such provision. Option A सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 10। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Next question. Under Section 41 of the Specific Relief Act, an injunction cannot be granted to restrain any person from instating or prosecuting any proceedings in a court not subordinate to that from which the injunction is sought. Option B, to restrain any person from applying to any legislative body. Option C, to restrain any person prosecuting any proceedings in a criminal matter. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स एज पर ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 11 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 12 क्लॉज 2, डी सेक्शन 13। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ गुड्स by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. What is this type of contract called as? Option A indemnity, option B guarantee, option C bailment, option D pledge। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Caveat emptor means option A purchaser beware, option B seller beware, option C things outside commerce, option D a warning letter। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसुएंस एड आइडम मीन्स ऑप्शन ए गुड फेथ, ऑप्शन बी ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टीज, ऑप्शन सी ओपिनियन ऑफ द ऑफरी, ऑप्शन डी मीटिंग ऑफ द माइंड्स। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। Next question. A contract is an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act whose statement is this. Option A
हल्सबरी, ऑप्शन बी सालमन, ऑप्शन सी पिप्सॉन, ऑप्शन डी पोलक। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।